So mostly, sedimentary rock their form, they weathered at one place, then maybe form as a in situ and they will drifted. So they will drifted by different agents. So different agents can consider wind हो कि river हो कि glacier हो. So river तुम्हारा wind ର capacity नहीं लाते के तुम्हारा transport करिए. तो mostly ये कि transporting case होची तुम्हारा water medium का river medium तुम कहीं पर जो थ्री की most of the sediment are transported and they contribute the formation of the sedimentary rock. So here हम देखिए what are the different type of flow, fluid flow. So the fluid motion, so fluid माने water mixed sediments. The fluid motion that depends upon the flow velocity, flow viscosity, and roughness of the bed, which it will flow. And the smooth through पूरा water आराम से flow करे. So the rough through पूरा बैठे वो उठी वो की direction change करेगा. तो so that के there will change in direction or velocity due to the roughness of the bed. So according to that, the two types of flow were established. One was laminar flow, one was turbulent flow. One was laminar flow, one was turbulent flow. So laminar flow, where in this flow the particle they will move parallel to each other. They all will move in the single direction. Suppose you imagine the particle water flowing through a pipe. The pipe ଭିତରେ water ଟା flow କରୁଛି. तुम यदि कौन थिंग पकईल सी आराम से पारालेली गोटे डायरेक्शन में फ्लो कर चले जो देख पूरा काम एंड व्हाइट वाटर फ्लो कर तुम यदि कौन जिन पकड़ पूरा से सीधा गोटे लाइन में जीव तापर एपट साइड को आगोटे पकड़ सहित पारालेल दैट मीन्स कि यदि वाटर फ्लो करुँच जो लामिनार फ्लो हो गोटे ऑब्जेक्ट पकईबी डायरेक्शन में आराम से जो गोटे ऑब्जेक्ट पकईबी डायरेक्शन में आराम से they will not mix, their path will not mixed, the path mix karibo nahi. So when a laminar flow is flowing, then the particle within the laminar flow they will not intermix with each other. When intermixed mostly they will flow parallel to each other, and they all will flow in a single direction. They will not change direction. So the direction change karibe nahi. So that is the laminar flow. So laminar flow केतरो भी जितने तुम्हारा viscosity of the flow is greater than the velocity. Viscosity of the flow is greater than the velocity. In the parallel sheet में the streamlines are never intertwined, means they will never intermixed. So these are streamlines. So direction of the flow that is called streamlines. They will not mix with each other. So mix away. Whereas in case of turbulent flow, the velocity will increase, viscosity of the fluid will decrease, and the particle will flow randomly. They can move in any direction. But the water flow, that will be in a particular direction. So in between them, they will change direction. So suppose the gote direction में resultant direction में भी gote, but so many intermixed है भाई. यदि गोटे पार्टिकल पकड़ लेती किसी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो भूली जीवो कि आ पाथ से तो सीधा आ पाथ से तो इंटरसेक्ट करिवो so that they will intertwined with each other ହେଲା so it is similar are intertwined so constantly ସେମାନେ direction change करथबे but ताका resultant flow direction होची गोटे रे सेटा कहते laminar flow and turbulent so गोटे flow laminar हबो कि turbulent हबो that is determined by a number that is called as Reynolds number. These are the laminar flow because they are flowing over a very smooth surface and also depend upon the velocity and it is here they are flowing through a rough surface they are turbulent. There are other factors also, the velocity, viscosity factor as well.
ଆମେ ଦେଖିବା this is a laminar flow, then suddenly slope increase kala, speed badla, it convert to a turbulent. Okay, normally you will see near a waterfall. Here waterfall slope increases so that the laminar flow is converting to turbulent. This is a transition between laminar and turbulent. So they can be determined by this parameter that is called as Reynolds number. The Reynolds number is also the ratio between the velocity and viscosity. It is the ratio between, you can say, inertial velocity and viscosity. It is calculated by rho VL by mu, rho VL by mu. So rho is density. You can say per cc. Mu is velocity. You can say meter per second or centimeter per second. Length is meter, that means length is depth. Or if it is flowing on a pipe, that is diameter. If you go to pipe flow করছি তার সেটা করা diameter. তারপরে আসবে bulk viscosity. এটা তোমার করা bulk viscosity. Bulk viscosity has a unit of Pascal into second. This bulk viscosity can be converted to kinetic viscosity. So kinetic viscosity is your mu by rho. This mu by rho. This mu by rho, it can be written like this in terms of kinetic viscosity. It has a unit of meter square per second. Kinetic viscosity as a unit of meter square per second. So Reynolds number, it is a dimensionless quantity. Tricky. It is the ratio between the inertial velocity and viscosity. So viscosity, it can be converted to kinetic viscosity. So kinetic viscosity is mu by rho. So this value of Reynolds number, it will determine whether a flow will be turbulent or laminar. So where the value is less than 500, if the Reynolds number value is less than 500, then the flow is always laminar. The flow is always laminar. If it is greater than 2000, that is always turbulent. Because laminar turbulent, that depends upon these factors: velocity, length, or depth, you can say. So in any condition, any type of depth or in any type of velocity, if the Reynolds number is less than 500, then it will be always laminar. If it is greater than 2000, then it will be always turbulent. Less than 500, less than 500, তাহলে laminar flow. If it is greater than 2000, then turbulent flow in any condition. 500 to 2000 is transition. That means you have a value of 600, the Reynolds number. It may be a turbulent flow, may be a laminar flow, depending upon condition. So below 500, always laminar. Above 2000, in any condition, they will do turbulent. In between, you have to check condition. Then it
it will be determined whether laminar or turbulent. So ଆଉ ଗୋଟେ parameter जोटाको flow determine करे that is होची Froude number जोटा कि regional force by gravitational force. So Froude number it is determined by V by root over of GT. So Froude number it is also dimensionless. V is velocity of the flow, G is acceleration due to gravity, D is water depth. So Froude number is also used to describe different pattern of the flow. So if less than 1, if greater than 1, if equal to 1. So if less than 1, it is subcritical flow. If greater than 1, it is supercritical flow. If is equal to 1, it is critical. So if Froude number has a value less than 1, that flow will be called as subcritical. If it is greater than 1, it is called as a supercritical. Equal to 1, it is called as a critical flow. So when if it is greater than 1 in supercritical condition, that is also called as upper flow regime. And if less than 1, it is called as a lower flow regime. So Froude number is inversely proportional to the depth. Froude number is what? Inversely proportional to the depth and directly proportional to the velocity. That means कि जो जगह depth कहाँ होगा से जगह पे Froude number अधिक पाएगा जो जगह velocity बहुत अधिक पाएगा से जगह रे Froude number अधिक पाएगा. So it is like a supercritical condition can be compared with the turbulent condition. So any sediment particle that is at rest condition, it should be lifted. It should be lifted to be in motion. So the motion lift correctly. So the amount of velocity is required to be lifted. It is its entrainment velocity. Entrainment velocity, or we can say erosional velocity. So the different size of particle. So different size of particles require different amount of velocity. So that means they will be lifted. So once they will be lifted, they will be in motion at a lower velocity. Suppose तुम example लिया कि तुम्हें नई गुड़े तुम गोटे डंगा थुआ हो ताकि से पानी बाड़े हो सही सेम velocity रो वाटर बट सी ताको मूव कर पारे तो तुम एट जब ते पुश करे दला कि भीतर को से भासी पड़े. सो थिंग होची कोन कि गोटे पार्टिकल रो motion initiate करेगा ताको entrain करेगा will require more velocity. So what are the forces required to enter a particle? The particle here, the it has the drag in जाए तो आप एक बोलते ड्रैग फोर्स पर तो बड़ा क्या बोले ड्रैग फोर्स पड़ी ता सही था ड्रैग फोर्स भी मोर सफिशिएंट हवा दरकार जो तरह की पार्टिकल टा मूव करि परियो ता सहित ग्रेविटी एक्ट करछ ता सहित ग्रेविटी एक्ट करछ तो पार्टिकल ए डायरेक्शन रे ड्रैग हवा हेले it should be lifted.
So how a particle is lifted, that is represented by or explained by a Bernoulli equation. Bernoulli theorem, Bernoulli equation মনে আছে? So Bernoulli effect রে তোমরা you can explain how a particle will be lifted. যেତେବେଳେ তোমার velocity ଅଧିକ ଥିବ তোমার ଏଠି particle କଣ rolling action ରେ ଗଡି ଗଡି ଯାଇପାରିବ, but ଯଦି saltate ହବାକୁ ହେଲେ ୟାକୁ କଣ lift ହବାକୁ ପଡିବ। So lift ହବାକୁ ହେଲେ you can represent that you can explain that lifting of particle on the basis of Bernoulli effect. So कौन Bernoulli effect हम देखिए। तो Bernoulli equation explain करें कि कोटी suppose भर की जो pressurized पानी बाहर वाले पाइप तमें तारा ओपनिंग टाइम जितने narrower करवा सेते pressure एक वाटर release हो। suppose ये जगह तुम्हें water enter करोगे ये जगह रे release हो। तो ये जगह रे जितने के enter होची से आंसर एटी release होची। तो जब वाटर फ्लो कर चालू जितने तुम्हारा एक पार्टा नैरोर हो जितने तुम्हें एक पार्टा नैरोर हो सेठी के अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट करिया पहले तारा वेलोसिटी जगह रे इंक्रीज कर वेलोसिटी का जगह रे इंक्रीज कर लाइक बर्नौली इक्वेशन थ्रू रे एक्सप्लेन करा। समझा में पर वेलोसिटी नंबर u1 और वेलोसिटी नंबर u2 ठीक है। तो एपटे तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर ρ1 एपटे ρ2 देन तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एपटे कदा a1 होगा एपटे a2 होगा। सो जते बेले तुम्हारा फ्लो करिवो वाटर थ्रू इट अदर वाटर को फ्लो करिवो ताले it will be at this end you will also extract same amount of water। तो ताले कौन वो सेठी से same amount of water extract कर। तो जेहेतु पार्टिकल v1 तुम्हारा पार्टिकुलर डेंसिटी एक चेंज हो ना पार्टिकुलर डेंसिटी एक चेंज हो ना तो एटी जेते के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन আছে एटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी गला। So to release that much of water, the velocity should increase। तो ये अगर velocity increase करेगा तो तुम्हें ये थी enter करो जो water है कि जिस क्षेत्र की ये release करेगा ये तो area process में बढ़ी जाएगी तो आपको speed बाहर करेगा प्रयोग तो पूरा exit part रे जो भी narrow रहेगा तो velocity will increase so that it will also extract that much of water। जो है कि नॉर्मली हमें कौन सी भी पाइप में गाड़ी खड़ी होती है तो नोजल जो रहता है ताको बहुत कि नैरोवर करत कि कंट्रोल भी से आंसर करते कि कितने स्पीड रे वाटर ताठो रिलीज हो। वन एंड एंड टू एंड नहीं हुआ। सो दैट मींस कि मास ऑफ फ्लूइड एट 1 should be equal to mass at 2। mass you can calculate v1 ρ1 into a1 is equal to v2 ρ2 a2। so যেহেতু similar fluid that means it has density same on both side density same আছে so v1 a1 is equal to v2 a2। yes so जेहेतु मोर a2 is now smaller than a1 so to equate these things must have v2 greater than v1। तो जाहिर करो v2 greater than v1। नेक्स्ट थिंग हम को कंसीडर करिवा द कंजर्वेशन मास एंड एनर्जी along the length of the tube। सो बर्नौली इफेक्ट अनुसार टोटल एनर्जी टी कौन होगा रो चीज जोटा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस
rho v square by 2 will be kinetic energy and pressure. This is the total energy. The total energy ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ potential energy तो kinetic energy plus pressure. ବୁଝିପାରିଲ ସେଠି ତୁମର କ'ଣ potential energy at the two end will be constant କାହିଁକିନା there is no change in level no ତୁମର difference in level ର କିଛି difference ନାହିଁ ତୁମର potential energy ସବୁବେଳେ constant ରହିବ so potential energy କ'ଣ ରହିବ ସବୁବେଳେ constant ରହିବ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମର mass ଆଉ conservation of energy ହବ ତ ଗୋଟେ particular condition ରେ ତୁମର kinetic energy potential energy pressure plus loss ସବୁବେଳେ constant ରହିବ तो যদি এই এটি লেভেল চেঞ্জ হতে পারে দিস থিং ইজ কনস্ট্যান্ট বাট এই এন্ড রু এই এন্ড কু যেতে আসুছি তো সেটি কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে বিকজ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তো ভেলোসিটি যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে তো কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে সো কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ যদি হচ্ছে তো এই এন্ড অফ এই এন্ড রে তুমি এনার্জি কনজরভেশন যদি আপ্লাই করিও তাহলে এই এন্ড রে যেতিকি এনার্জি আছে এই এন্ড রে তুমি সেতিকি এনার্জি পাইও तो जदि ये जगह रे तुम्हें वेलोसिटी इंक्रीज करे देला ये जगह कौन वेलोसिटी इंक्रीज करे लगा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी एपटे एपटे कांस्टेंट अछि जदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करियला ताको एडजस्ट करिया पले प्रेशर टा का डिक्रीज कर प्रेशर टा डिक्रीज कर तो जोटी नैरो रहउछि बा वेलोसिटी इंक्रीज करछि तो से जगह रे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करछि and to adjust that pressure decreases एटा जो कौन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जोटा कि एट द टू एंड्स ऑफ द पाइप सपोज कि there is a particle so water flowing over a particle so this is the upstream side suppose this is the downstream side so while water flowing over a particle this layer it is narrower here than these two parts upstream और downstream part में ये part टा कौन सी narrower अच्छी तो सेटी पे जो part है तो narrower होची but area of cross section decrease करची in that part the velocity will be more than this so upstream downstream to over the particle velocity अधिक तो एटी ए जगह क्रॉस सेक्शन कमी जो ए जगह क्रॉस सेक्शन अधिक रहबो सो जेते आ ऊपर पार्टिकल फ्लो करछि तो लेवल जेहेतु डिक्रीज करूनी ए चेंज होनी सो ए जगह रो ए जगह पर्यंत तुम कोन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहे तो ए जगह रे तुमरो मोर वेलोसिटी अछि देन दीस टू प्लेसेस तो ए जगह रे वेलोसिटी अधिक बढ़ी जाउछि ए जगह रो दैट मींस कि टू एडजस्ट द for the conservation of energy the pressure should decrease आ ऊपर जति की प्रेशर पड़तो सेटा डिक्रीज करी तो प्रेशर डिक्रीज कले इजीली लिफ्ट हे जो इजीली लिफ्ट हे जो एंड ड्रैग फोर्स ऐड करछि सो दैट की रिजल्टेंट होछि सी ए डायरेक्शन में एंट्रेन हे जो बा लिफ्ट हे जो तो जेहेतु ए जगह कोन स्पीड इंक्रीज कर जाउछि सेते वेलोसिटी सॉरी प्रेशर डिक्रीज कर सो प्रेशर डिक्रीज करले पार्टिकल टा कोन हो फ्री तो लिफ्ट कर लिफ्ट कले संग संग को ड्रैग फोर्स हो रिजल्टेंट डायरेक्शन में एंट्रेन कर तो एटा सी बर्नौली इफेक्ट थ्रू रे यू कैन एक्सप्लेन हाउ ए पार्टिकल इज लिफ्टेड तो पार्टिकल जो एंट्रेन होची एंट्रेन हला परे जेतरा ଗୋଟେ पर्टिकुलर वेलोसिटी रीच करिवो से सेटा मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन रहबो तापर तो वेलोसिटी डिक्रीज करो पुनी अगेन से सेटल हो अगेन से कौन सेटल हो बा अगेन से डिपॉजिट हो तो जतले सेटल हो तळको तो कोनसी पार्टिकल जतले इट इज सेटलिंग और डिपॉजिटिंग विद इन द फ्लो से तळको ग्रेजुअली मूव करियो
रो gradually move करियो. So it is explained by तुम्हारा how the particles are deposited. It is explained by Stokes law. So according to tomorrow Stokes law, when the particle is settling within a fluid at a particular at a particular depth, the velocity of the particle does not changes. The velocity of the particle change हुए. तो कौन जिसको drop करियो, suddenly से जोर जोर तापर धीरे 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 धीरे. तो जो पॉइंट में तारा velocity change हुई, that point is terminal velocity. That's called the terminal velocity. So once a particle it is settling through the fluid, so that means when it is settling through the fluid, its velocity will not change at a certain after a certain depth. That is called as a terminal velocity. Terminal velocity. So how we can calculate that terminal velocity using Stokes law? So according to Stokes law, so terminal velocity is equal to gt square. Fluid involved अछि ଆଉ मोर पार्टिकल इन्वॉल्व अछि. तो एटा हला मोर इक्वेशन, जोटा कि पार्टिकुलर सेटलिंग इक्वेशन. तो v होछि तमरा टर्मिनल वेलोसिटी. तो एटा आपण लिख v होछि टर्मिनल वेलोसिटी. v होछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. rho is the density of the particle. Rho is the viscosity of fluid, and d is the diameter of the particle which is settling. Just Stokes law. So according to Stokes law, you can determine at what velocity a particle will settle. That depends upon the density of the particle, fluid of the density of the fluid upon which it is settling through, and viscosity, and diameter, and gravity, acceleration due to gravity. Then comes to at what velocity the particle will be the erosion condition co-velocity particle the erode haba lift haba co-velocity से transportation condition रहबा कोट रे sedimentation condition by deposition condition. That is represented by a diagram that is called your Hughes-Storms diagram. So the x-axis रे grain size दिया है और y-axis रे velocity दिया है and different fields are also defined करा है. So the smaller grain size of finer grain and a coarser grain. According to thing कि जिते तुम्हारा फाइनल पार्टिकल हम सेते से लेसर वेलोसिटी दरकार ताको इरोड करिवे जनरल स्टेटमेंट रे. तो जिते फाइनल पार्टिकल हम सेते तार कम वेलोसिटी दरकार ताको इरोड करिवे, बट जिते कोर्सर पार्टिकल हम सेतो अधिक दरकार हवा कथा. But here in this case, if you see this is the erosion thing, then the erosion curve above this velocity particle will erode. So at initial stage for finer particle it is much higher. Finer particle में बहुत अधिक अच्छी जिते
तोर पार्टिकल साइज बढ़ी बढ़ी जाउछि वेलोसिटी से अनुसार डिक्रीज करके जाउछि. So for clay particle, which are both finer particle, they have cohesion between particle. तांको भीतर कौन है? Particle भीतर cohesion है. So particle यदि cohesion थाउछि, ताले it is very difficult to erode them because they must be overcome their cohesion force to erode them. If a finer particle is clay size particle, so that's why they will require a greater velocity for erosion. But जितने particle size gradually increase करियो से अनुसार lesser थोड़ा amount of velocity दरकार because की cohesion तक धीरे धीरे decrease करियो. Up to sand size particle it will decrease. Then after that with size जितने बड़ा size है वो it will require greater velocity. So clay particle, by clay size particle, they will erode at a higher velocity, but they will be in transportation condition at a greater range of velocity. Both lesser velocity भी समान transportation condition रहेगा. And जितना पण तुम्हारा flow होगी, जितना पण तो they will always in transportation condition. So clay particle will only deposited in stagnant water. What deposit was stagnant water deposit. जितने भी पार्टिकल अच्छी इरोजन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी बा जो पार्टिकल गोटे पार्टिकल जति वेलोसिटी से इरोड हो ताटू लेसर वेलोसिटी से सबरे ट्रांसपोर्टेशन हो ताटू लेसर वेलोसिटी से सेडिमेंटेशन तो द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन और इरोजन को आ जाए गोटे पार्टिकल ला ताले वेलोसिटी ऑफ इरोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ and जितने तुम्हें पार्टिकल साइज इंक्रीज करियो सेते से कम ट्रांसपोर्टेशन रेंज शो कर फॉर सपोज क्ले साइज पार्टिकल तो 1 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर पर सेकंड पर्यंत भी सिकट ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन रह कर तो धीरे धीरे जितने पार्टिकल साइज बढ़ुची ता रेंज सा धीरे धीरे डिक्रीज करके चलछि ये बेसी कोर्स पार्टिकल वाला से गोटे हायर वेलोसिटी रे तोरा गोटे हायर वेलोसिटी अछि तो टिके भी वेलोसिटी कमले से कौन संगे संगे डिपोजिशन कंडीशन को प्राइस इज नॉट इन केस ऑफ क्ले सबटू लीस्ट वेलोसिटी इरोजनल वेलोसिटी होजी सैंड साइज पार्टिकल करा आटू आ कोटा लेसर वेलोसिटी इरोड होबा आटू जदी पार्टिकल फाइनर हैला दैट आल्सो रिक्वायर्ड हायर वेलोसिटी आटू द पार्टिकल कोर्सर हैला दैट आल्सो रिक्वायर्ड हायर वेलोसिटी So the critical erosion velocity that is not a particular line, maybe line दउछथि but it is a zone. Critical erosion velocity जोटा zone हिसाब से कंसीडर कराइ छै. Then on a particular particle size जो देखिबा it can erode at this velocity, then again on this velocity, then again on this velocity. और एट वेरिएबल velocity से erode होई परबे. कंडीशन कोन कि जदि गोटा पार्टिकल बहुत समय पर्यंत रेस्ट अछि फॉर लॉन्गर टाइम से रेस्ट अछि ताल ताको इरोड करिया टिके अधिक वेलोसिटी दरकार तुम धर गोटे जगह बहुत सब बसी गली उठिया को टाइम लागो जदि कोनोसी पार्टिकल जस्ट इट कम टू रेस्ट जस्ट रेस्ट को आसी तापर इरोड होबा ताको लेसर वेलोसिटी दरकार सेबे गोटे पर्टिकुलर पार्टिकल साइज इट कैन erode at a different velocity depending upon this condition कि how longer it is in rest condition केते longer पर्यंत से rest condition में अछि सेटा तार लिखा है the erosion velocity must decrease about 30% to cause deposition of the force grain hence so critical erosion velocity is a zone जोंतरे कि तोर जदी बहुत longer time पर्यंत कोन पार्टिकल जदी स्टेबल रहउछि बा rest rochi it will require more velocity than the same size particle which is rest then comes to motion and again to the motion rachi rest ko asla then again motion ko jibako taको lesser velocity required